Hello everybody, today I am going to teach you effects of change of temperature. Take about 150 gram of ice in a beaker. Take 150 gram of ice and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is contact with the ice. Thermometer has a bulb. It is called its bulb of thermometer. There are two types of thermometer. One is laboratory thermometer, another is clinical thermometer. Laboratory thermometer we use in clinics. Clinical thermometer we used in clinic, and laboratory thermometer we used in laboratories, so that its bulb is in contact with the ice. So this laboratory thermometer's bulb is contact with the ice as in figure 1.6. Start heating the beaker on a low flame. Note that the temperature when the ice starts melts. You should note the temperature when this ice starts melt. Note the temperature when all the ice has converted into water. And again you should note the temperature when all this ice is converted into water. These two temperature is same. When the ice starts melting and when all the ice has converted into water, these two has same temperature. Record your observation for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. On increasing the temperature of solids, on increasing its temperature, the kinetic energy of the particles increases. The solids is also made up of particles, and this kinetic energy of these particles increases due to increase in temperature in solids. Due to this increase in kinetic energy, the particles starts vibrating with greater speed. These particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction. This force of attraction between the particles, ये overcome करता है ये kinetic energy supplied by heat between the particles. The particles leave their fixed position. ये particles अपना fixed position छोड़कर and start moving more freely, और बहुत freely move करने लगता है. और stage is reached when the solid melts, और एक stage आएगा जब ये solid melt होकर liquid में convert हो जाएगा. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. Now you should know what is melting point. Melting point एक temperature है at which a solid melts, जिस टेम्परेचर में सॉलिड्स मेल्ट होता है लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए एट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बिटवीन है सॉलिड्स के, उसका इंडिकेशन है मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन K stands for Kelvin. The process of melting, that is changing of solid states into liquid state, is known as fusion. जो solid state से liquid state में चेंज हो रहा है उसे फ्यूजन कहते हैं. When a solid melts, its temperature remains the same. यहाँ एक्टिविटी पर हमने देखा था when solid melts, जब
ये आइस मेल्ट होना शुरू हुआ था उस समय भी सेम टेम्परेचर था, और ये आइस पूरा लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद भी सेम टेम्परेचर था। क्यों? वाई अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो व्हाट डज द हीट एनर्जी गो? तो वो हीट एनर्जी कहाँ गया? अब हम जानते हैं। You must have observed during the experiment of melting. You must have observed during the experiment of melting. We all experience in this melting experiment that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. जो टेम्परेचर इस आइस में और वाटर में चेंज नहीं हुआ था, इस आइस और इस वाटर में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब सब आइस मेल्ट्स हो चुका था उस समय भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। This happens even thought we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. The heat gets off in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles, as the heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. ये हीट एनर्जी कहाँ गया? ये हीट एनर्जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड स्टेट्स के पार्टिकल्स का, उसको ओवरकम किया ये हीट एनर्जी ने। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के वो लिक्विड स्टेट में आ गया, वो एनर्जी यहीं सप्लाई हुआ। यही यहाँ पर क्या है? एज द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker. जो हीट है वो बीकर के इनसाइड में हिडन है, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। उसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट का डेफिनेशन है, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू liquid at atmospheric pressure. It's called at its melting point is known as latent heat of fusion. latent heat of fusion इसका डेफिनेशन यहाँ पर है, बहुत आसान है समझने में। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So particles in water at 0 degrees Celsius to 73 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature, because this energy is stored as a form of latent heat. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. When you supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gases. इस टेम्परेचर में लिक्विड गैसेस में चेंज होना शुरू होता है। The temperature at which a liquid starts boiling at its atmospheric pressure is known as boiling point. हमने melting point पढ़ा था, ये boiling point का definition है। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Boiling जो है वो bulk phenomena है। Boiling जैसे कि boiling of water, ये water को boil करता है। boiling हम करेंगे तो ये whole water एक ही साथ boil होता है, इसे bulk phenomena कहते हैं। whole water एक ही साथ boil होता है, इसे bulk phenomena कहते हैं। Particles from the bulk of the liquid gains enough energy to change into vapor state. जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो या नीचे के पार्टिकल्स से हीट एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। Particles from the bulk of the liquid gains enough energy to change into vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin. 100 degrees Celsius equals to 273 plus 100 equals to 373 Kelvin. Can you define the latent heat of vaporization? Yeah. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gases at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of fusion.
Do it in the same way as we have defined the latent interfusion. Particles in the steam, that is water vapor at 373 Kelvin, has more energy than water at the same temperature because this steam has gained more energy in the form of latent heat of vaporization. This is because particles in steam has absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us changes state from solid to liquid and from liquid to gases on application of it. But there are some that changes directly from solid state to gaseous states and vice versa without changing into liquid state. It is known as sublimation. Take camphor or ammonium chloride. Crush it and put it in a china dish. इसे china dish कर दे. Put an inverted funnel. This is inverted funnel over the china dish. Put a cotton cloth on the stem of the funnel. जो स्टीम है पर एक cotton cloth लगा दो. As shown in figure 1.7. Now heat slowly and observe what do you infer from the above activity. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state or vice versa is called sublimation. जो एक कैम्फर है या एमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज होता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज होके इसे सब्लिमेशन कहते हैं. अब हमने पहले पढ़ा था कि स्टेट हम टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के चेंज कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे वो स्टेट है उसे प्रेशर घटा के या बढ़ा के भी चेंज कर सकते हैं मैटर के स्टेट्स. जैसे कि ड्राई आइस ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. It is stored in high pressure. To solidify this carbon dioxide gas. Effects of change of pressure. We have already learned that the differences in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. जो distance है constituent particles का सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में गैसेस स्टेट में वो डिफरेंट होने के कारण ही सॉलिड लिक्विड या गैसेस स्टेट फॉर्म हुआ है बना है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस enclosed in a cylinder. Will the particles come closer? Yeah. Do you think that increase or decrease the pressure can change the state? Yes, of matter. By applying pressure, particles of matter can be brought closer together. यहाँ figures और दिया है. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Yes, applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide, CO2? It is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere. 1 atmosphere is the unit of measuring pressure exerted by a gas. The unit of pressure is Pascal. 1 atmosphere equals to कितना प्रेशर होता है 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. ये Pascal प्रेशर होता है. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Thus, we can say that pressure and temperature determine the states of substance, whether it will be solid, liquid, or gaseous. Interconversion of three states of matter. सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो वेपराइजेशन, गैस से
गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हुआ था सब्लिमेशन, सॉलिड से फिर गैस में चेंज हुआ था सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड में था कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन, डू यू ऑलवेज नीड टू हीट or change pressure for changing the states of matter? Can you quote some example from day-to-day life where change of states from liquid to water vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Boiling point में reach नहीं होके भी वो gaseous state में liquid state से change हो सकता है। हाँ, water when left uncovered slowly changes into vapor। जब water को uncovered ढक के नहीं रखते बाहर या अंदर जहीं भी, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वो स्लोली वेपर में चेंज हो जाते हैं। व्हाट क्लोथ्स ड्राई ऑफ, व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स से मैटर का वो ऑलवेज मूविंग करता है और कभी रेस्ट में नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एंड गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसी भी चीज़ में, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होता है गैस में हो या लिक्विड में हो या सॉलिड में, वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है सभी का एक ही नहीं होता है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होता है। इज एबल टू, इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। इन द केस ऑफ लिक्विड में जो सरफेस में जो पार्टिकल्स है, इज एबल टू हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। सरफेस में वो पार्टिकल से उसका हायर काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि वो नीचे से सबसे एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो हायर ही एनर्जी होगा। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल्स से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़कर वेपर में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से गैस में चेंज होना, वेपर में चेंज होना एनी टेम्परेचर में, परंतु बॉइलिंग पॉइंट से वो बिलो होना चाहिए, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन का अफेक्ट करता है? लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, उसमें 5 ml वाटर लो, टेक 5 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लो एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। विंडो के पास एक फैन में रख दो 5 ml। इसमें फैन में टेक 5 ml वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। जो चाइना डिश है उसमें तुम 5 ml वाटर रख लो एंड कीप इट इन, इसको भी फैन में रख दो। टेक 5 ml वाटर इन चाइना डिश, ओपन चाइना डिश। ओपन चाइना डिश है उसमें भी 5 ml वाटर रख दो डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड। जो कपबोर्ड है उसके अंदर रख दो इसको, और ऑन अ सेफ इन योर क्लास। Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. जो सब evaporation process होने में जितना टाइम लगा उसको रिकॉर्ड कर लो। Repeat the above 3 steps of activities on a rainy day. Rainy day में उस एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी हमने किया था, फिर उसको रिपीट करो rainy day में। And record your observation. What do you infer about the effects of temperature, effects of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? वो evaporation में क्या effect लाता है? You must have observed that the rate of evaporation increases when with an increase of surface area. surface area increase होने से जो evaporation process है वो faster हो जाता है। We know that evaporation is a surface phenomena. इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से ही तो वो इवेपोरेट होता है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, यदि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राई ऑफ वी स्प्रेड देम आउट। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी इवेपोरेशन रेट फास्टर हो जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू go into the vapor state.
और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी क्या आता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते एक टेम्परेचर में, एक गिवन टेम्परेचर में। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, जब अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है एयर में, तो क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो जो इवेपोरेशन रेट है वो डिक्रीज होता है। एंड इंक्रीज इन वाटर विंड स्पीड, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट clouds drive faster on a windy day with the increase in wind speeds. The particles of water vapor move away with the wind. विंड के साथ जो ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर है एयर में प्रेजेंट वो भी फास्टली मूव करता है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को डिक्रीज करता है इन द सराउंडिंग्स। इसी प्रकार विंड स्पीड्स इवेपोरेशन रेट फास्टर करता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग भी कॉज कर सकता है, कैसे, इन एन ओपन वेसल the liquid keeps on evaporating, the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation। जो पार्टिकल्स है लिक्विड का वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है रिगेन करने के लिए, क्या एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो एनर्जी लॉस्ट हुआ इवेपोरेशन के समय उसको रिगेन करने के लिए सराउंडिंग से वो अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग को, जो एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग्स में तो कूल ही होगा, इट में एंड मेक्स द सराउंडिंग कूल। व्हाट हैपन व्हेन वी pour some acetone nail polish remover on your plum, प्लम का मतलब ये हाथ है, इसे प्लम कहते हैं। इसमें जब आप नेल पॉलिश रिमूवर या फिर एसीटोन लगाते हैं तो कूलिंग फील होता है ना, वो भी इवेपोरेशन के कारण ही हुआ है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर प्लम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट्स कॉजिंग द प्लम टू फील कोल्ड, वही यहाँ पर लिखा है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटर इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लार्ज लेटर इन इवेपोरेशन आपने पढ़ा ही, हेल्प्स टू कूल द सरफेस, वो सरफेस को कूल करता है। जब हम पानी लगाते तो यहाँ पर हीट होगा, हीट स्टोर होगा, उसको पानी लगाते तो पानी के साथ वो इवेपोरेट हो जाता है और ये कूल होता है ना, यही यहाँ पर कहा है। कैन यू साइड सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच वेयर वी कैन फील द इफेक्ट्स ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कॉटन क्लोथ्स हमें समर में क्यों पहनना है। ड्यूरिंग समर वी प्रीफर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के कारण, विच कीप्स अस कूल। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gains energy from the surroundings or body surface and change into vapor, हमने पहले पढ़ा है। the heat energy equal to the latent heat of vaporization, heat energy latent heat of vaporization से इक्वल है। it's absorbed from the body से absorb करता है, leaving the body cool। cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। कॉटन हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एक्सपोज करते हैं इवेपोरेशन के जरिए एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमें कॉटन क्लॉथ समर में स्वीट्स करता है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, यहाँ पर आइस कोल्ड वाटर है, इसके आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, क्यों। लेट अस टेक सम आइस वाटर इन अ टम्बलर, टम्बलर का मतलब ऐसा बाउल होता है, उसमें हम रखते आइस कोल्ड वाटर। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देता है आउटर सरफेस में, क्यों। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो रहा है, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर कॉन्टेक्ट में आने पर एनर्जी लॉस करता है, जो उससे उसको वो वाटर वेपर एनर्जी लॉस करता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट्स, एनर्जी लॉस होने के बाद तो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। फाइनली ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।